Hello students, good morning. Hope you all are fine at your home. On the behalf of TPS, now I am going to discuss about trigonometric identities, that is plus one topic for plus one non-medical, right? So, in first lecture, now we are going to discuss about concept of quadrant. Concept of quadrant means what? In 10th class, all have studies about the concept of quadrant. There are two lines usually perpendicular to each other, and if the point O is intersecting point between line x dash and y dash, and this point is called origin of this quadrant axis, right? And this is also called the quadrant axis. इसको हम quadrant axis बोलेंगे. अगर दो लाइन को दूसरे में perpendicular करेंगे, जिस point पे कटेगा, that is called origin and axis. आप इसको origin की intersecting इसको बोल सकते हैं, ठीक है? And right side से दोनों लाइन क्या करेगा, चार quadrant में चार पार्ट में डिवाइड कर देगा axis को. This is x axis, positive axis, negative axis, positive axis, negative axis, and y. You can also say that x, o, y. That is first quadrant, second quadrant, third quadrant, and this one is fourth quadrant, right? And देखिए degree in previous lecture we have already discussed about the relation between degree and radian. Radian और degree में relation क्या होता है मैंने डिस्कस भी किया था. अगर कहीं तो 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या? पाई रेडियन. पाई रेडियन का फॉर्म आप जस्ट थोड़ा सा डैश में देखते हैं, राइट? तो पाई 90 डिग्री मींस पाई बाय 2 एंड 60 डिग्री अगर दिया है कहीं तो 60 मींस पाई बाय 3. इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास अल्टीमेट आ जाएगा. 45 अगर है तो पाई बाय 4 एंड 30 डिग्री दैट इज पाई बाय 6. पाई बाय 6 दीस आर इन रेडियन फॉर्म एंड दीस आर इन डिग्री फॉर्म. ये आपका डिग्री के फॉर्म में और ये सारे रेडियन के फॉर्म में. तो देखिए अगर कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर एक दूसरे से कटता है किसी भी पॉइंट पे, एक लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है जब काटेगा वो दूसरा लाइन वर्टिकल अगर कट रहा है उसको, तो दीज टू लाइन विल मेक 90 डिग्री एट दैट पॉइंट. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये 90 डिग्री बनेगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो अगर कंप्लीट हो रहा तो 90 डिग्री बनेगा या 90 में से छोटा बनेगा. ठीक है, अगर कहीं डिग्री बन रहा होगा तो मैंने बोला यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा. इन सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस मोर देन 90 और लेस देन 90 डिग्री बोलते हैं ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा. सेकंड में 90 से बड़ा 1 से छोटा होगा. इसी तरह से मैं थर्ड में बोलूंगा 180 मोर देन 180 लेस देन 370 डिग्री 270 डिग्री. अंडरस्टूड? एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट 270 मोर देन एंड 360 लेस देन. अगर 360 में समथिंग ऐड करेंगे तो फिर अगेन आपको क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा. अब देखिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू राइट एंगल इन दिस फॉर्म. पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा. हम लोग क्यों लिख रहे हैं इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे चलना होगा. देखिए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव लाइक sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा पॉजिटिव. 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आपके सिलेबस में. ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली sin थीटा एंड cos थीटा आर पॉजिटिव, अदर विल बी नेगेटिव लाइक tan थीटा, cot थीटा, sin theta and cot theta. These are negative in cos theta. These are negative in second quadrant. And in third quadrant only tan theta and cot theta are positive, other negative. Sin theta, cos theta, sec theta and cos theta. These are negative in third quadrant. In fourth quadrant only cos theta and sec theta are positive, other will be negative. That is sin theta, cos theta, tan theta, cot theta. ये सारे negative. अब देखो इसको जरूरत क्यों पड़ा, हम क्यों इसको लिख रहे हैं ऐसे. तो आप ऐसे भी बोल सकते याद करने के लिए ऐड शुगर टू कॉफी. ऐड शुगर टू कॉफी. अगर ऐड शुगर टू कॉफी अगर करेंगे आप तो इसमें करना क्या है, ऐड का मतलब होगी ऑल.
सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, पहला क्वाड्रेंट। शुगर का मतलब ऐसे हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। अगर मैंने कहीं लिखा कि साइन थीटा है, इसका मतलब है 1/, इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा, और साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। 2 मींस tan थीटा, अगर tan थीटा है तो उसका उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कॉफी, सी से कॉफी हो गया तो cos थीटा का पॉजिटिव है, इसका उल्टा क्या होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा जब पॉजिटिव है तो आप लिख सकते हैं 1/sec थीटा भी पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने लिखा ऐड शुगर टू कॉफी। अब देखो ऐड शुगर टू कॉफी अगर मैंने लिखा यहाँ पे, तो इसमें क्या है बताते हैं। इसमें करना क्या है कि ये सारे आपको ऐसे रखना है कि और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट में क्या होगा, आपको पॉजिटिव हो, सेकंड में sin थीटा cos थीटा इज पॉजिटिव अदर नेगेटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा cos थीटा इज पॉजिटिव अदर नेगेटिव, इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा and sec थीटा इज पॉजिटिव अदर नेगेटिव। एंड ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, एंड दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th क्लास। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर sin π/2 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, cos थीटा होगा, cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा, tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा, cot π/2 माइनस थीटा tan थीटा, sec π/2 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec π/2 माइनस थीटा sec थीटा। एंड इसमें अगर प्लस कर दूं तो क्या आएगा, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 माइनस थीटा लाइक करेगा, सारे के सारे पॉजिटिव होता है, तो मैंने लिखा sin π/2 माइनस थीटा, sin का उल्टा cos π/2 माइनस थीटा sin tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा, cot π/2 माइनस थीटा tan थीटा, एंड sec π/2 माइनस थीटा cosec थीटा, एंड cosec π/2 माइनस थीटा sec थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। बट अगर एंगल π/2 प्लस थीटा ले लिया मैंने, π/2 प्लस थीटा का ले लिया, sin π/2 प्लस थीटा है cos थीटा, का sin थीटा इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, cos π/2 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, क्योंकि cos थीटा जाता क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे cos थीटा sec थीटा tan थीटा एंड cot थीटा these are negative, ये नेगेटिव होता है। तो देखो cos π/2 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा, tan π/2 प्लस थीटा that is second quadrant, tan theta is negative in second quadrant, so minus cot theta, and cot π/2 plus theta minus tan theta. Similarly cosec π/2 minus theta, cosec theta is positive in second quadrant, so we can write here that is sec theta, and sec π/2 plus theta equals to that is cosec theta. So sec π/2 plus theta की अगर मैं बात करूंगा तो this is minus cosec theta बेटा, क्योंकि sec theta is also negative in second quadrant। तो देखो यहाँ पे क्या सवाल आ रहा है कि जो फंक्शन पॉजिटिव होगा उसका ही उल्टा जो आएगा वही पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। इसमें एक चीज तो समझ में आई अपने को कि अगर एंगल π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है तो हमेशा फंक्शन चेंज होता है, साइन का उल्टा cos नहीं होगा, बट साइन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होगा। मान लो कि अगर फर्स्ट में लाई कर रहा है π/2 माइनस का सारे पॉजिटिव होगा, π/2 प्लस थीटा अगर आएगा तो sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव अदर नेगेटिव हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स cos लिमिट नोट आउट, इसको पहले नोट करिए या ध्यान देखिए, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा आपको इसमें, नोट करके लिखिए इसमें, if the angle of any trigonometric function are in the form of n pi by 2 plus minus theta, where n is odd integer, n is odd integer, लाइक आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 5 होगा, एंड सो ऑन। Then function will change, then function will change and sign will also change।
Sign will also change according to the given condition. According to the given condition. Understood? इसका मतलब क्या है? कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अगर उसका एंगल n पाई बाय 2 प्लस माइनस के फॉर्म में होगा तो साइन को चेंज फंक्शन को चेंज होगा ही होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा ही होगा, ये तो कंपल्सरी है. इफ द एंगल ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ n by plus 2, the n is odd integer, then function will change and sign will also change according to the given condition. हो रहा है ना? So pause the video, note down. अब देखो दूसरा क्या है इसमें बेटा. दूसरा इसमें मान लो कि मैंने आपको बताया कि पाई के फॉर्म में अगर आ गया, पाई के फॉर्म में अगर आ गया, यहाँ से मैं देख सकता हूँ, यहाँ से अगर मैंने लिखा साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा तो क्या होगा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड साइन, इसका साइन थीटा होगा. दूसरा है cos पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा, माइनस cos थीटा होगा क्योंकि cos थीटा नेगेटिव होता है सेकंड में. थर्ड वन इज that is implied here like tan theta negative cot pi minus theta minus cot theta sec pi minus theta minus sec theta and cosec pi plus theta cosec. सेवंथ में मान लो कि मैंने लिख दिया साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड में क्या है, थर्ड में साइन थीटा नेगेटिव 8 दैट इज cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, 9 10 पाई प्लस थीटा दैट इज tan थीटा पॉजिटिव, 10 दैट इज cot pi plus theta that is positive cot theta, and 11 that is sec pi plus theta minus sec theta, and cosec pi plus theta that is minus cosec theta. So देखो इसमें करना क्या है, इसमें क्या क्या, अगर पाई माइनस थीटा की बात किया मैंने तो पाई माइनस थीटा विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट. In second quadrant, sin theta and cos theta are positive, other function will be negative. So sin pi minus theta, that is sin theta cos pi minus theta, that is minus cos theta. Tan pi minus theta, that is minus tan theta cot pi minus theta, that is minus cot theta. Sec pi minus theta, minus sec theta. Cosec pi plus theta. अगर मैं cosec की बात करूँगा तो cosec pi minus theta first of all consider pi minus theta. Pi minus theta cosec theta. था, यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं हुआ. अगर पाई के मल्टीपल में है वहाँ पाई बाई 2 के टर्म में चेंज हो रहा था, लेकिन इस केस में चेंज नहीं होगा पाई के टर्म में, बट साइन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, राइट. अब यहाँ देखो जब मैंने प्लस कर लिया तो प्लस का मतलब पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट को आई करेगा. इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव अदर फंक्शन नेगेटिव. सो sin pi plus theta that is minus sin theta cos pi plus theta minus cos theta, tan pi plus theta that is tan theta plus theta is positive third quadrant, cot pi plus theta that is cot theta, sec pi plus theta that is minus sec theta, and cosec pi plus theta that is minus cosec theta. So this is all about the concept of angle. अगर इस फॉर्म में रहेगा तो अब ये यूज कहाँ है, आप इसमें कंक्लूजन क्या निकल के आता है, जब भी एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपके पाई के मल्टीपल में होगा, राइट, 180 डिग्री 360 डिग्री, then function will never change but sign will change according to the given condition. फंक्शन चेंज नहीं होगा इसके साथ, क्या होगा, साइन चेंज होगा. तो आप नोट करके लिखिए, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके लिखिए. If the angle of any trigonometric function
function are in the form of n pi plus minus theta, where n equals to natural number, integer value, all integer, not plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, and so on. You can say that set of integer. This is negative positive, then function will never change, but sign will change. But sign will change according to the given conditions, right? इसमें क्या होगा बच्चों, जब फंक्शन n पाई प्लस n की वैल्यू मान लो मान रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, पाई प्लस थीटा अगर आ गया तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, बट क्या होगा, साइन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. वी कैन से दैट और क्वाड्रेंट, एंगल क्वाड्रेंट इज इन व्हिच क्वाड्रेंट एंगल विल लाई, किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा. सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो and note down. Now we are going to discuss some numericals related to this topic.